एआई एजेंट, एजेंटिक वर्कफ्लो, ऑटो जीपीटी, ये सब सुन के ऐसा लगता है कि यार तुम रॉकेट साइंस के बारे में बात कर रहे हो, बट एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेल फॉरगेट अबाउट द जार्गन्स, मैं तुम्हें एआई एजेंट्स के बारे में ना बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता है कि व्हाट आर एआई एजेंट्स, उनको कैसे यूज करते हैं, उनको कैसे बनाते हैं, आई विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप थ्रू ऑल दीज थिंग्स एंड इतना इजी तरीके से बताऊंगा ना, अगर तुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट भी हो तब भी तुम्हें सब चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। एआई एजेंट ना बिल्कुल एक टेक टीम को बिल्ड करने जैसा है। हाय एवरीवन, आई एम निशांत चाहर, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं everything that you need to know about AI agents in 2025 and even 2026। अब टेक्नोलॉजी ना बहुत स्पीड से चेंज हो रही है। एआई एजेंट्स के बारे में लोगों को 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने पहले जो चीज़ें पता थी ना, वो अब शायद काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई हैं। सो आई हैड मेड वन मोर वीडियो अराउंड एआई एजेंट्स लाइक 6 months बैक, बट आई थिंक इसमें उसको हम और इन डेप्थ समझने वाले हैं एंड बहुत छोटे छोटे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ समझेंगे क्या डिफरेंस होता है एक एआई एजेंट में, तुम्हारे नॉर्मल चैट में, एंड 3 लेवल्स में इस चीज़ को हम डिवाइड करने वाले हैं। लेवल 1 ऑफ एआई क्या होगा? जब तुम नॉर्मल चैट पे बात करते हो, उसके साथ कोई भी एमसीपी सर्वर्स कनेक्टेड नहीं है, तुमने कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसको नहीं दे रखी है, जब भी नॉर्मल तुम चैट जीपीटी के फ्री वर्जन पे, जेमिनी के फ्री वर्जन पे या फिर क्लाउड के फ्री वर्जन पे कुछ भी चैट करते हो, तो बहुत ही बेसिक इंटरनल लेवल तुम्हें आंसर्स मिल जाते हैं। एक लेवल इसका ऊपर हो जाता है जब उसके साथ तुम एमसीपी सर्वर्स को कनेक्ट कर देते हो, या फिर तुम उसके साथ कनेक्टर्स, फॉर एग्जांपल जेमिनी में तुम्हारे जीमेल का, कैलेंडर का, डॉक्स का, शीट्स का, इन सब का एक्सेस आ जाता है, तो इट हैज मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। सो थोड़ा सा बेटर हो जाता है इन द रिस्पॉन्सेज विच आर पर्सनलाइज्ड। फाइनल हमारा आता है एआई एजेंट। एआई एजेंट के पास तुम सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हो जो भी उसको रिक्वायर्ड है टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, एंड एजेंट्स तुम एक स्पेसिफिक चीज के लिए बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक फ्लाइट बुकिंग एजेंट बनाना है, तो फ्लाइट बुकिंग एजेंट को तुम सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दोगे, चाहे वो तुम्हारा कार्ड इन्फॉर्मेशन हो, चाहे तुम्हें कहाँ, कौन सी डेस्टिनेशन से कौन सी डेस्टिनेशन पे जाना हो, क्या तुम्हारी प्रेफरेंसेस है, एक्स वाई जेड। तो यही हम समझेंगे एक थोड़ी सिंपल भाषा में विद एग्जांपल्स टुडे। अब एआई एजेंट बनाने के लिए जो मेरे को टूल सबसे बढ़िया लगता है वो है n8n। अब ये ना एक ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल है। तुम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो चीजों को, एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करके यू मेक ऑटोमेशंस यूजिंग एआई एजेंट्स। अब ये ना तुम विजुअली क्रिएट करते हो, तुम क्या करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो एलिमेंट्स को लेके एंड वर्कफ्लोज को क्रिएट करते हो, बट विद द फुल पावर ऑफ कोड, एआई एंड लॉजिक। अब n8n को तुम डायरेक्टली ना वेबसाइट पे यूज कर सकते हो, बट उसके साथ में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो जब तुम n8n की वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है, तुम यहाँ पे तुम प्राइसिंग चेक करोगे ना, तो इसकी प्राइसिंग भाई स्टार्टर के लिए ही 20 यूरोज पर मंथ बिल होती है। 20 यूरोज पर मंथ का अप्रोक्स जो तुम्हारी कॉस्ट आती है वो 2000 के अराउंड तुम्हें पड़ेगी। तो डायरेक्टली अगर तुम स्टार्टर भी यहाँ पे लेते हो, एंड दिस इज एनुअली, मंथली बिल करोगे तो 2500 के आसपास आएगी। अब इसका एक ईजियर एंड थोड़ा सस्ता सॉल्यूशन है विच इज यूजिंग होस्टिंगर। तो तुम n8n डायरेक्टली होस्ट कर सकते हो होस्टिंगर के वीपीएस को यूज करके। अब वीपीएस क्या होता है? तुम्हारा वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है। इसके अंदर तुम और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो तुम एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर को बाय कर लेते हो, देन यू कैन लाइक होस्ट मल्टीपल वेबसाइट्स, होस्ट योर AI मॉडल्स और इवन होस्ट n8n, एंड इसके साथ बहुत अलग अलग चीजें तुम कर सकते हो। वन ऑफ द यूज केस इज n8n डायरेक्टली। अब तुम n8n को ना डायरेक्टली उनकी वेबसाइट से यूज कर सकते हो, बट द प्रॉब्लम विच यू विल फेस इज वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, ठीक है, इट इज अराउंड 2.5K। इसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है दैट इज यूजिंग होस्टिंगर का VPS। यू कैन डायरेक्टली सेल्फ होस्ट यूजिंग दैट एंड इट्स कंपैरेटिवली लाइक चीपर फॉर यू। सो एंड प्लस अगर तुम्हारे पास VPS है, VPS इज अ वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, तुम इस पर और चीजें भी कर सकते हो, उसके बारे में बात करते हैं। बट पर मंथ तुम्हें 549 का पड़ता है। यू गेट 2 CPU कोर्स, 8GB रैम, 100GB NVMe डिस्क स्पेस एंड 8 TB बैंडविड्थ। इसमें तुम और भी बहुत सारी चीजें कर पाओगे। इससे तुम्हारा डेटा, वर्कफ्लो, API की सारी चीजें प्राइवेट रहती हैं, नो थर्ड पार्टी एक्सेस है, एंड लॉन्ग रन में तुम्हें क्लाउड प्लान से सस्ता पड़ जाता है। एंड साथ में द बेस्ट पार्ट इज यू कैन क्रिएट अनलिमिटेड वर्कफ्लो। बस सेल्फ होस्टेड VPS पे ना तुम्हारा एजेंट स्लो नहीं होगा, एंड तुम कॉम्प्लेक्स लॉन्ग रनिंग टास्क भी बहुत इजीली कर पाओगे। एंड मैं VPS होस्टिंगर का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनका जो सेटअप है वो बहुत ज्यादा इजी है। जैसे तुम वेबसाइट पे जाते हो ना, डायरेक्टली तुम्हें यहाँ पे सेल्फ होस्टेड n8n का तुम्हें ऑप्शन मिल जाता है, यू कैन डायरेक्टली यूज इट फ्रॉम देयर, एंड जो प्लान है वो भी काफी बढ़िया है। एंड हम भी इस वीडियो में ना n8n को सेल्फ होस्ट करेंगे होस्टिंगर पे, एंड वी यूज दैट। बट उससे पहले समझते हैं AI एवोल्यूशन के बारे में कि कैसे हमने LLMs के साथ चैट करना स्टार्ट किया था, हाउ दे हैव इवॉल्व्ड राइट नाउ, एंड एक एनालॉजी के साथ समझेंगे क्या डिफरेंस होता है इन एन एजेंट एंड नॉर्मल चैट। अब इसमें ना 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले तुम्हारा AI एजेंट नहीं बना, सबसे पहले तुम्हारा AI एक इंटर्न है तुम्हारे लिए। इंटर्न क्या है? फॉर एग्जांपल जब भी तुम किसी चैट एप्लीकेशन में बात करते हो, वी कंसिडर दैट एज एन इंटर्न। अब सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैं LLM बहुत बारी बोल रहा हूँ, LLM एग्जैक्टली होता क्या है?
LLMs आर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। अब ये LLMs जो होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो होते हैं, ट्रेंड होते हैं तुम्हारे वास्ट इंटरनेट पे बहुत जो डेटा है उस पे, बुक्स पे, रिपोर्ट्स पे, गिटहब पे, बहुत अलग अलग चीजों पे। एंड इन सब की ना ट्रेनिंग की कट ऑफ डेट होती है। तो जब तक तुम इसमें वेब सर्च या फिर कोई और एक्सटर्नल चीज ऐड नहीं करते जिससे तुम्हें लेटेस्ट आउटपुट्स दे, ये तुम्हें थोड़ा पुराना डेटा देता है। जैसे अभी के टाइम पे अगर तुम चैट जीपीटी पे जाओगे एंड यहाँ पे फ्यूल सर्च टिल व्हाट डेट इज द मॉडल ट्रेंड, आई एम ट्रेंड टिल जून 2024, तो अभी हमारा चल रहा है 2025। तो तुम देखोगे इसका जो डेटा सेट है वो 2024 जून तक ट्रेंड है। अगर इसके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं होता तो तुम्हें गलत आंसर्स देना स्टार्ट कर देगा। अब चैट में जब भी तुम बात करते हो तुम इसे एक पर्टिकुलर इनपुट देते हो एंड उस पर्टिकुलर इनपुट के हिसाब से वो तुम्हें एक आउटपुट देता है। तो इन इनपुट्स को हम प्रॉम्प्ट्स कहते हैं। एंड इसी के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसमें आई हैव एक्सप्लेन्ड हाउ टू बिकम अ गुड प्रॉम्प्ट इंजीनियर या फिर हाउ यू शुड क्रिएट अ प्रॉम्प्ट। अब अच्छा प्रॉम्प्ट बनाओगे तो अच्छा आउटपुट मिलेगा, अगर बेकार प्रॉम्प्ट बनाओगे तो बहुत बेकार आउटपुट मिलने वाला है। अब तुम एक प्रॉम्प्ट देते हो, वो जो तुम्हारा प्रॉम्प्ट है वो LLM के पास जाता है, LLM फिर एक तुम्हारे लिए आउटपुट क्रिएट करके तुम्हें प्रेजेंट कर देता है। अब चाहे कोई भी टूल है, चाहे वो चैट जीपीटी है, क्लॉड है, जेमिनी है, इसको तुम अपना AI इंटर्न बोल सकते हो। तुम इसको एक पर्टिकुलर सिंपल टास्क दोगे और सिंपल टास्क को कंप्लीट करके तुम्हें दे देगा। जब भी तुम इसे कॉम्प्लेक्स टास्क प्रोवाइड करोगे वो कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल तुम इसे एक सिंपल टास्क दोगे कि यार राइट अ फंक्शन टू सॉर्ट एन एरे, ये कर देगा। बट जैसे ही तुम इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दोगे, हेल्यूसिनेट करना स्टार्ट कर सकता है। बट एज द मॉडल्स आर गेटिंग बेटर, देयर आर थिंकिंग मॉडल्स एंड देयर आर नॉर्मल मॉडल्स। जब जहाँ पे थिंकिंग मॉडल्स आ जाते हैं वो थोड़ा सा बेटर आंसर देते हैं। तुमने एग्जांपल्स देखा होगा, कुछ टाइम पहले एक क्वेश्चन बहुत कॉमन था कि स्ट्रॉबेरी में कितने आर हैं। अगर तुम पुराने मॉडल से ये चीज़ पूछते तो हमेशा वो गलत आंसर देता था, वो 1 या 2 बोल देता था। एंड इस वजह से यू अंडरस्टैंड दैट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में या फिर लॉजिकल रीजनिंग प्रॉब्लम्स में काफी बारी LLMs इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम इंटर्न्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो इसने 3 आवर्स में बता दिए हैं बिकॉज ये थिंकिंग मॉडल को यूज कर रहा है। स्टार्टिंग में जब तुमने देखा हो तो थॉट फॉर अ कपल ऑफ सेकंड्स एंड देन इसने तुम्हें एक आंसर दे दिया। अब तुम जेमिनी पे भी देखोगे तो इसने इसके लिए एक पाइथन कोड लिख दिया है जिससे वो आर काउंट कर रहा है, राइट। तो इसने थिंकिंग थोड़ा यूज किया है एक कोड लिखने के लिए। अब जैसे जैसे LLM मॉडल तुम्हारे बेटर होते जाते हैं, चैट भी इंटर्न थोड़ा प्लस प्लस होता जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रॉबेरी वाली प्रॉब्लम पहले आती थी, अभी स्ट्रॉबेरी वाली प्रॉब्लम अब नहीं आती है क्योंकि मॉडल्स बेटर हो गए हैं। सिमिलरली जब तुम इंटर्न से काम करवाते हो तुम उससे अगर सिंपल इंस्ट्रक्शंस में चीजें बताते हो कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो वो अच्छे से तुम्हें आंसर्स दे देता है, अच्छे से तुम्हारा काम कर देता है। जहाँ पे भी एम्बिग्यूटी आ जाती है वहां पे वो अच्छे से आउटपुट तुम्हें नहीं प्रोवाइड करता है। वहां पे तुम्हें बताना पड़ता है कि भाई नेक्स्ट स्टेप में ये एग्जैक्टली चीज तुझे करनी है। सेकंड चीज है, इसके पास खुद की डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। तो जब तुम चैट से बात करते हो तो खुद डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी फॉर XYZ चीजें, यानी खुद से डिसीजंस नहीं ले पाएगा इवन आफ्टर एक्सेसिंग द पास्ट कॉन्वर्सेशंस। ये तुम्हें नॉर्मल सर्च से बेटर आउटपुट दे सकता है। दैट इज द बेस्ट थिंग दैट इट कैन डू। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके पास तुम्हारी पर्सनल चीजों का कॉन्टेक्स्ट नहीं है अंटिल एंड अनलेस तुम इसको प्रोवाइड करते हो। फॉर एग्जांपल अगर तुम चैट जीपीटी या जेमिनी पे जाओगे, यहाँ पे सेटिंग्स में जाके पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में अगर तुम यहाँ पे ऐड करते हो चीजों को, यहाँ पे एप्स में जाके अगर तुम यहाँ पे ऐड करते हो एप्स को, तो ही इसके पास इन सब एप्स का एक्सेस आ जाता है, अदरवाइज इट डजंट हैव। सिमिलरली चैट जीपीटी में भी अगर तुम जाओगे, यहाँ पे चीजों में तुम प्रोवाइड करते हो इसको, चाहे वो गूगल ड्राइव हुआ, वन ड्राइव हुआ, शेयर पॉइंट हो, कुछ भी, तो ही इसके पास एक्सेस आता है सिमिलरली। और लाइक एप्स वगैरह का तुम अगर एक्सेस देना चाहो तो ही मिलता है। अब ये पावरफुल है बट इसके साथ तुम्हें कॉन्स्टेंटली सुपरविजन लाइक चीजें चेक करनी पड़ती रहेंगी। इसका आ जाता है हमारे लेवल 2। अब एक जूनियर डेवलपर की तरह काम करता है। यहाँ पे तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। तुम इसको अगर एक टास्क दोगे तो इट विल ब्रेक डाउन that task into multiple steps and complete that particular task. For example, अगर मैं इसको ये टास्क देता हूँ, fetch data from this API, process it and save the output in a CSV file, तो ये इसको अच्छे से कर देगा। अब यही एग्जैक्टली एक AI वर्कफ्लो होता है। अब यहाँ पे सीनियर डेवलपर एक फिक्स्ड प्लान बनाता है एंड AI इंटर्न उस प्लान को फॉलो कर लेता है। जब तुम कर्सर में या फिर विंडसर्फ में कोड करते हो ना, तो उसका जो एजेंट है, अगर तुम उसको प्रॉपर टास्क प्रोवाइड कर देते हो कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ये सारी चीजें तेरे को करनी है अच्छे से, तो इट विल गिव यू अ बेटर आंसर। अगर तुम वेगली कोई रैंडम चीजें उनको बता देते हो विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, देन इट विल लाइक किल योर होल प्रोजेक्ट। अब इसमें ना AI के पास थोड़ी और पावर आ जाती है बिकॉज इसके पास तुम्हारे इंटरनल डॉक्यूमेंट्स का, API का, सब चीजों का एक्सेस हो जाता है एंड इन सब चीजों से ना AI इन्फॉर्मेशन फेच कर पाएगा। अब फॉर एग्जांपल
अगर तुम अपना रेज्यूमे प्रोवाइड करते हो एंड एक जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हो एंड बोलते हो कि यार इन दोनों को पढ़ो एंड गिव मी अ बेटर आउटपुट, या फिर गिव मी सजेशंस जो मैं अपने रेज्यूमे में इंप्रूव कर सकता हूँ इफ आई वांट टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल। अब ये ना बहुत सारे और डेटा पे भी ट्रेन हो सकता है कि पहले इस वाली जॉब प्रोफाइल के लिए कौन से रेज्यूमेस को शॉर्टलिस्ट किया गया है, किस टाइप की प्रोफाइल्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होती हैं। दैट इफ यू ऐड द डेटा, इसी को हम बोलते हैं फैंसी शब्दों में रैग, दैट मीन्स रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इसका सिंपल मतलब है जवाब देने से पहले ना एआई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को स्कैन करेगा, उसमें देखेगा कि क्या चीजें यूजफुल हैं एंड उस हिसाब से तुम्हें एक टेलर मेड आंसर प्रोवाइड करेगा। अब एलएलएम ना तुम्हारे इंटरनल इन्फॉर्मेशन को तुम्हारे एक्सटर्नली जो तुमने डेटा इसको प्रोवाइड किया है उसके साथ ऑगमेंट करता है एंड फाइनल तुम्हें आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। अभी भी ये जूनियर डेवलपर है बिकॉज मैंने इसको एक सेट टास्क दिया था विद पर्टिकुलर स्टेप्स जिसको इसने फॉलो किया। इसके पास अपनी खुद की कोई रीजनिंग पावर नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर जेडी का फॉर्मेट गलत हो या फिर रेज्यूमे में कुछ प्रॉब्लम्स हो तो ये अच्छे से उसको पार्स नहीं कर पाएगा एंड इट विल नॉट ट्राई टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड तुम्हें सीधा एरर थ्रो कर देगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वापस एक सीनियर डेवलपर की हेल्प चाहिए होगी। यहाँ पे तुम्हारे आ जाते हैं एआई एजेंट्स। एआई एजेंट को हम एक सीनियर डेवलपर कंसिडर कर सकते हैं इन सम टर्म्स, नॉट एग्जैक्टली, अगर तुम उसको एक पर्टिकुलर टास्क अच्छे से करने के लिए ट्रेन कर दो। जैसे तुम एक सीनियर डेवलपर को एक टास्क देते हो कि भाई लॉगिन ना बहुत स्लो है, इसको फिक्स कर दो। अब यहाँ पे आगे ना गेम चेंज हो जाता है क्योंकि ह्यूमन डिसीजन मेकर को हमने एआई के थ्रू रिप्लेस कर दिया। वो खुद को रीजन करेगा, चीजों को चेकआउट करेगा, मल्टीपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेगा एंड एक एक स्टेप को चेक करके फिर फाइनली डिसाइड करेगा कि जो तुम्हारा फाइनल आउटपुट आ रहा है वो सही भी है कि नहीं है, या फिर चेंजेस करने से क्या डिफरेंस आया एप्लीकेशन पे, चीजों पे। अब यहाँ पे ना तुम उसको एक फाइनल गोल देते हो, ठीक है, एक लेवल का गोल देते हो एंड उसके लिए वो बार बार आइटरेट करता रहता है, ट्राई करता रहता है until and unless that goal is not achieved। अभी ऑटोनोमसली काम करता है 3 सुपर पावर्स को यूज करके। सबसे पहले आता है रीजन, सोचता है कि भाई प्रॉब्लम क्या हो सकती है, मतलब वो गोल को अचीव करने से पहले बेस्ट प्लान बना लेता है। देन एक्ट करता है, मतलब काम करता है। वो अलग अलग टूल्स का यूज करके, चाहे वो एपीआई हो, तुम्हारी डॉक्यूमेंटेशन हो, वेब सर्च हो, अलग अलग टूल्स को यूज करके तुम्हारे लिए प्लान क्रिएट करता है एंड देन आइटरेट करता है, दैट मींस सीखता है। अगर वो अटेम्प्ट में फेल हो जाता है तो अपने आउटपुट को रीजन करता है कि व्हाई दिस हैपेंड, अपने प्लान को ऑटो करेक्ट करता है एंड फिर से उस पर काम करना स्टार्ट कर देता है। अब जो रीजन एंड एक्ट का लूप है ना, ये फंडामेंटल है एंड इसका ना एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है विच इज कॉल्ड रिएक्ट फ्रेमवर्क। ये मेरा कोड वाला रिएक्ट नहीं है बट दिस इज ऑल्सो रिएक्ट। सोचो हर स्टेप पे ना एआई रीजन करता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए एंड फिर उस एक्शन को परफॉर्म करता है एंड ये जो तुम्हारी साइकिल है वो चलती रहती है। जो हमारा प्रॉब्लम था फिक्स द स्लो लॉगिन, उसी पे काम करता है, उसी पे इसको आइटरेट करके बताता हूँ कि अगर ये एआई एजेंट उस पे काम करेगा तो किस तरीके से करेगा। तुम्हारा गोल क्या है, हमें स्लो लॉगिन को फिक्स करना है। अब एजेंट का थॉट प्रोसेस क्या होगा, व्हाट विल बी द हाउ। अब वो रीजनिंग देगा, पहले सोचेगा कि यार ये स्लो क्यों हो सकता है, बैकएंड में प्रॉब्लम होगी, फ्रंट एंड में प्रॉब्लम होगी, एपीआईज में प्रॉब्लम होगी, कहाँ एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, लेट्स सी। तो सबसे पहले उसको लगता है भाई डेटाबेस में प्रॉब्लम हो सकती है, तो डेटाबेस में चेक करता है क्वेरी करने का कि क्वेरी करने में कितना टाइम लग रहा है फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, कि लॉगिन करने के लिए ऑथेंटिकेट करने जा रहा है तो ऑथेंटिकेशन वाले क्वेरी में या एपीआई कॉल में कितना टाइम लग रहा है। उसने ये किया, उसको पता चला भाई 15 मिली सेकंड में आ जा रहा है तुम्हारे पास रिस्पॉन्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो डेटाबेस इज फाइन। नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या होगा, वो चेक करेगा भाई मेरा जो बैकएंड है, बैकएंड से जब मैं एपीआई कॉल कर रहा हूँ उस वाले कोड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वहां पे जो ऑथेंटिकेशन हो रहा है एग्जैक्टली वहां पे क्या दिक्कत है। स्लैश लॉगिन जो एपीआई एंड पॉइंट है उसको मॉनिटर करेगा, देखेगा वहां से कितने टाइम में रिस्पॉन्स आ रहा है। अब वहां से हमारा रिस्पॉन्स फॉर एग्जाम्पल 1.5 सेकंड में आ रहा है। 1.5 सेकंड इज अ लॉट ऑफ टाइम अगर तुम एपीआई कॉल्स की बात करो तो तुम्हें समझ आ रहा था भाई यहीं पे बॉटलनेक है। अब उसके बाद क्या करेगा भाई, वो देखेगा एपीआई का जो कोड है वो कहाँ पे है, उसके लिए रिलेवेंट फाइल ढूंढेगा। फॉर एग्जाम्पल हमें मिल जाती है ऑथ कंट्रोलर .js में, ये हमारी पर्टिकुलर फाइल है, यहाँ पे जाके अब हम काम करना शुरू कर देंगे। अब इसने इनसफिशिएंट पार्ट को आइडेंटिफाई करेगा एंड उसको फिर से रीराइट कर देगा। तो ये तुम्हारा एजेंट का काम हो गया। फाइनल स्टेप क्या होगा एजेंट के लिए, उसके बाद भाई फिर से टेस्ट को रन करना ट्राई करेगा, देखेगा कि अब जो तुम्हारा लॉगिन है वो फास्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे एआई एजेंट्स ऑटोनॉमसली तुम्हारे लिए एक टास्क को ब्रेक डाउन करता है, उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस को चेक करता है एंड फाइनली बेस्ट सॉल्यूशन तुमको प्रोवाइड कर देता है। तो बस यही है एक एआई एजेंट की पावर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज टू क्रिएट द एआई एजेंट। हम क्या एक एआई एजेंट बनाने वाले हैं। पहले वील क्रिएट अ सिंपल वर्जन वेयर वील यूज द चैट एंड वील सबमिट अ जेडी ऑन दैट चैट एंड देन वील क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, Google document in which we'll add our resume. Perplexity will take that JD and our resume and suggest us the changes that we should make in our resume. It will give us the output. We'll use that, create an AI agent. That AI agent is going to take that feedback, create a cover letter
and update a resume for that particular job profile and then put that in a Google Doc. One thing more you can do in this project is you can just add a sheet, Google Sheet, in which you'll add all the JDs that you want the cover letter and the resume for, and maybe update that particular Google Sheet with the final links of the cover letters and the resumes for each of the job profile that you are applying to. This will automate all your tasks. So I'll walk you through with the first solution, and the second solution is gonna be a homework for you guys. So before you set up n8n, I would like to tell you about Hostinger. So Hostinger पे when you go, यहाँ पे तुम्हारे पास एक option होता है in services. You can just create on a self-hosted n8n. VPS is a virtual private server, and using VPS you can do a lot of things. But अगर हमें बस n8n भी run करना है, then this is one of the best options out there. What you can do is you can just use this. So you can use this directly. यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जाना है, नीचे scroll करोगे, KVM2 will be sufficient for you for most of the use cases. Even if you create a project that you want to host, if you create your personal website that you want to host, कुछ भी तुम्हें करना है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होस्ट कर सकते हो, मल्टीपल चीजें यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, किसी प्रोजेक्ट के लिए डेटाबेस होस्ट करना है वो भी कर सकते हो. So VPS में you can do anything and everything. So this is the price, but if you choose this plan, you have an option. I'll give you a coupon code that you can use. We'll go to the card. You can change the duration, select the duration from 1 month, 12 months, or 24 months. The 24 months plan is going to be the most cost effective. When you go here, you have a coupon code. You'll just add Nishant, and apply, and you'll get extra 10% off. Then you just have to continue, and your self-hosted n8n server will be ready. Okay, you're just gonna click on continue and pay the final amount. After purchasing it, when you'll go to your panel, hpanel.hostinger.com, then you will see your n8n hosted server. I'll scroll down. Here you can see I have my VPS where I've set up the n8n server. I'll click on manage all, and here I can see my n8n server which is running right now. I can just click on manage app and it will open my n8n server. When you open it for the first time, you will have to create an account, and after creating the particular account, you will be redirected to this web page. If you want to update, then here are the instructions that you can follow. How to update n8n, change the domain for n8n, to reset your password. All the documents are here. यहाँ पे तुम ब्राउजर टर्मिनल खोल सकते हो जिससे तुम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो इस पर्टिकुलर VPS को, and you can do all the changes. You can make all the changes in this. Cool. That is fine. I think हमें यहाँ तक सारी चीजें समझ आ गई हैं. इसके अलावा if you go to the n8n website, if you directly purchase it, you will see the pricing. यहाँ पर तुम्हें per month ये 2400 rupees का पड़ेगा. It's 24 euros. And if you buy the VPS, it will cost you around 500 rupees per month, which is almost 1/5 of the cost. And इसके साथ साथ the second benefit is VPS पे you can do multiple other things as well, and you have privacy, you have security, your API keys are safe, everything there. You have a lot of benefits. So definitely, if you are looking for a VPS, definitely check out Hostinger. Next, हमें क्या करना है? Now we will create our project. You can click on create workflow. It will then create a workflow for you, and n8n is very similar to any drag and drop application. तुम्हें यहाँ पे चीजों को drag and drop करना होता है. You can search also. So for example, if you click here, there will be multiple nodes that you can search here. So what is a node? Node is nothing but a block of code which is predefined inside n8n. So अलग-अलग task के लिए अलग-अलग nodes बने हुए हैं. There are trigger nodes, there are API nodes, there is AI agent also. That is also a node. So there are multiple types of nodes. As you can see, there is trigger manual node, on event node, on schedule, webhook, on form submission. So the first step I'll just add here on chat. So I'll chat and we will get the answer. On chat, when you add on this, यहाँ पे तुम्हें multiple और nodes का option मिल जाता है. There is AI, action in app, data transformation, flow, core, and human in the loop. For example, मेरे को AI पे click करूँगा तो I'll get a lot of options inside this. कि मेरे को कोई AI agent है यहाँ पे. There are multiple templates as well that I can copy directly. So there are like around 4,000 AI automation templates. काफी सारे जो तुम्हारी problems होंगे वो already यहाँ पे solve हो रखे हैं. You can just search and you will get a number of solutions directly. But
We are going to build our own. Next, हमने क्या decide किया था? We'll add a Google Doc. So I'll search Doc. Initially, we are using Google Doc. I don't want to update a document actually. So we'll search Google Doc. We'll click on Google Doc. We want to get a document जहाँ पे हम अपना resume add करेंगे. So we'll just click on get the document. I'll copy my resumes. So when you are doing it for the first time, you will have to add a Google OAuth. When I'll walk you through it also. So you will have to click on create a new credential. You need a client ID. You need a client secret. अब client ID, client secret कहाँ से मिलेगा? You can just click on this. It will open docs for you जहाँ से तुम पढ़ के steps follow कर सकते हो. Depending upon which service you want, you can either watch a video or just go through this directly. You'll have to create a Google Cloud account. After creating a Google Cloud account, you'll have to create a new project. You can create and name it like n8n test. So I have also created one. I call it n8n course. Okay. So you can name it whatever you want. After that, you'll have to enable some APIs. You'll go to Google Console, Google Cloud Console/library. You can search API and services, and in that you'll have to search for a particular service. You can just follow this. After that, you just have to enable it. Then you'll have to configure your OAuth screen. After configuring the OAuth screen, you'll have to add a number of apps to it. After doing all that, you'll get a client ID and a client secret. You'll have to copy the client ID and a client secret. Then you just click on save. And once you do that, it will be ready. You just have to click login and it will work. So cool. I'll just execute this step. Next, what do we want next? We want our Perplexity AI. We'll use this. And in this, we will add a prompt. So I'll just copy paste a prompt, which I've already written, and I'll explain it to you. We'll have to first trigger both the nodes. So for triggering the chart node, I'll copy this job profile, which is for associate product manager, University Grad 2026. I'll just copy this. It's a random job profile. So तुम कोई भी add कर सकते हो just for testing. Then उसके बाद you'll add relevance. I'll just do enter. It is the first node got executed. The second node also got executed. Third node पे now we have inputs. यहाँ पे we added this. When you click on this, it opens in a full screen mode where you can see what the output is. This is the minimum qualification. Then this is our prompt, and this is how we'll get the final output. So what you can do is, इसको हम as it is copy करेंगे. What we are going to do, we are going to Claude, and we will paste it here and ask it to improve the prompt. Improve this prompt. You can first give it some more context ki what is this, what you're talking about, or create a system level prompt जहाँ पे तुम बोलोगे you are a prompt engineer and improve this particular prompt. Now it will improve the prompt. It's going to write better prompt than you for sure. And I'll copy this as it is, and I'll paste it here. Just to check everything, I'll click on this and I'll see if there is no error. There's no error. As I can see, the job profile is here, our resume content is below that, and it has added the context for it. Now if I click on execute, it will execute the same. Let's see what we get. After this execution, next step हमारा क्या होगा? बताओ, guess करो. Next step हमारा होने वाला है adding an AI agent, which is going to create a cover letter for us and also update our resume. This is just going to give us suggestions depending upon the job profile or the JD that you give it. And finally, then we'll update the final version of our cover letter and our resume, and we'll update it to a Google Doc, or you can update it to Notion, or you can do whatever you want. Okay. This is the schema. This is the result we have got. These are the suggestions that we got. Okay. So we have got our result. Here are the suggestions. What we are going to do is, the next step is going to add an AI agent. There is a node for AI agent. We click on this. This is the chart output. What we want is our final output. This, we got the context from this. We'll define below. We'll create an expression. When we use an expression, we can add JavaScript to it. If you want to add some code, you can add that. These are the suggestions that we got, and this is our resume.
We'll take the document from here and add our resume here. Now we'll ask it to create a cover letter and update our resume. I'll copy this, I'll paste it to Claude. I've already done that and it gave me a better prompt that I can use. I'll just use this prompt. I'll copy it. I'll copy this and I'll paste it in my n8n expression. And here, this is a feedback for the given job profile. Using the feedback above, update the resume according to the provided content. Create both a professional resume and a cover letter for this profile. Critical formatting, blah blah blah. It has added all the points. This is how it looks. This is our prompt. We can just execute it. Before executing it, what are we going to do is we'll need to separate it out into two different outputs so that we can directly use those outputs, one for our cover letter and one for our resume, right? So it has missed one thing. For the output structure, as I can see, it has just provided one output structure. We'll use this. This is our separator. We'll copy this separator. We will have to use this. Also, for the AI agent to work, we'll need to add a brain to it. And for tools, we need a specific format. So we'll connect an output parser. We want a list. Okay, so we'll use a separator. We have added a separator and that is done. Number of items are 2. There can be more number of items, but currently we only have 2 number of items. When we add a Google Sheet to this, the number of items will increase and it will depend. So I'm using DeepSeek as the brain. I'm just using the basic chat. You can use a reasoner and it will be more cost effective for you. We'll have to create an API. You can just go to platform.deepseek.com. I've created multiple APIs using this. It's good for testing as it is comparatively cheaper. Sasta padta hai, so why not? We use it. Then this is done. We have added our brain to it. We'll just click on run and it will start working on our automation. The only issue with DeepSeek is it is comparatively slow, but it's fine. If the cost is very, very, very less. You can also use Gemini. Gemini का भी तुम अगर Google तुम AI Studio पे जाओगे तो AI Studio पे you can get a key. So it's done. As you can see, there are 2 outputs, 0 and 1. 0 is our resume and 1 is our cover letter. We got both the outputs. You can just add maybe we need a flow, we need to separate it out. We'll just connect docs. We'll test it out once. We'll update a document. We'll just add a new document link here. I'll copy the link. I'll paste it here. So the OAuth is already done, so I don't have to do anything. Once you do it, like if you do it once, then you don't have to do it again. Your credentials get saved. If I execute the step, it's empty because I have not added anything. Here I'll have to add text, so I'll just take it from here. This is the cover letter and I'll put it here and I'll execute. It got executed. We'll check the document. The cover letter got added, but the format is not good. So ये एक हमें issue solve करना पड़ेगा. We can use a markdown format, which will be better for this. So we'll update our prompt in the last step. We'll go here. We'll copy this. We'll go to Claude. We'll ask Claude to update this prompt and ask the AI to give us the output in markdown format. So markdown might be better in this case. We'll copy this and we will update it. Open this, we will update this. Cool, we have updated this. We will check if everything is done. I think I've missed this output format, and I think it should work.
Now we'll execute the step again, and you get the flow. This is how we have created one agent. What you can do is you can create another node here. It will be Sheets, Google Sheets. You will get rows from the sheet. Here you will have to add the document, add the sheet from that particular document. You'll have access to all your sheets here. And once you do that, you will just have to connect. You don't need a chart then. You can just connect this directly to your perplexity model. Then you'll have to run it in a loop until and unless all of them are done. Try to figure it out how you can do it. It's pretty simple, but I would like you guys to try it out. अगर मैंने कुछ भी मिस किया हो ना तो do comment down below. I'll create a full n8n tutorial. This was more about agents and how you can create agents. We will create a separate video for n8n. जिसमें बस n8n को explain करेंगे from scratch, from 0 to 100, and we will create multiple AI agents in that particular video. I hope ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी. जो मेन पर्पस था इस वीडियो का was to introduce you guys to AI agents and how AI agents work, and I think that is successful. There might be a few problems with the current code. You can complete it. You can also add sheets to it, but the main thing that I have already taught you is how you can create automations using n8n. I hope video अच्छी लगी होगी. Do check out Hostingware and use code Nishant if you want extra discount for the BPS. And yeah, thank you so much. I'll see you in the next video.